Welcome everybody to this new lecture of our paper Waves, Oscillation and Acoustics. Today we will discuss yet another new topic of our syllabus, that is about superposition of two collinear harmonic oscillation, or you can say it as resultant of two SHMS in same direction. Okay, oscillations having equal frequencies. Okay, हम ऐसी सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस के ऊपर आज बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू एसएचएमएस। ऐसी दो जो सरल रेखीय गतियां हैं, जो ऐसी दो तरंगे, ऐसी दो वेव्स जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और उनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल हो, यानी जिस आवृत्ति से वो दोलन कर रही हैं, वो वेव दोलन कर रही हैं, उनकी जो आवृत्तियां हैं वो भी बराबर आवृत्तियों की दोनों वो तरंग होनी चाहिए। यानी जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ भेजी जाती हैं, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, तो उनका रिजल्टेंट किस फॉर्म में होता है। और जो नोटिसेबल थिंग वो है जो इस टॉपिक में, वो ये है कि ऑसिलेशंस, जो उनके ऑसिलेशंस हैं, वेव्स जिस रेट से ऑसिलेट करिए, हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी इक्वल, या हैव टू बी इक्वल। ओके, नॉट will be equal, is have to be equal. This is the condition that the two waves आर ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वो समान आवृत्तियों की दो तरंगे हैं। तो टॉपिक ये है कि जब एक ही दिशा में एक साथ समान आवृत्तियों की दो सरल आवर्त तरंगे एक साथ भेजी जाती हैं, तो माध्यम के किसी दूसरी बिंदुओं पर उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी, उन तरंगों का परिणामी किस तरह का होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। और कंडीशन ये है कि उन दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हैं। यही टॉपिक हम करेंगे जब दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान नहीं होंगी, तब भी हम इसके ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो इस हमारे कंटेंट में है वो है कि ये जो केस है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ऐसी तरंगों के बारे में है जिनकी आवृत्तियां समान हैं, हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो दो तरंगे हैं, दो आवृत्तियां, दो तरंगे हैं जिनकी जो एक ही साथ एक दिशा में, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी इक्वल हैं। तो ऐसी तरंगों का रिजल्टेंट, परिणामी तरंग कैसी होगी, उसके बारे में ये टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस वन। So consider two simple harmonic waves of same time period t, that is of same wavelength lambda and of same frequency n. जब टाइम पीरियड सेम होगा तो वेवलेंथ सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। चूंकि आप ये जानते हैं कि जो टाइम पीरियड, किसी भी वेव के ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है टू कंप्लीट वन साइकिल, सो दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, and reciprocal of the reciprocal of the time period is equals to the frequency of that wave or frequency of that oscillation. Okay, so let A and B be the amplitudes of the waves. दोनों के अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं, जो आयाम जिन्हें हम कहते हैं, आयाम, दोनों तरंगों के आयाम हैं वो अलग अलग हैं। एक पहली तरंग का आयाम A है, दूसरी तरंग का आयाम B है। B द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स एंड फेज डिफरेंस इज फाई, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t ड्यू टू ईच वेव इज गिवन बाय। तो माध्यम, चूंकि माध्यम में तरंगों का संचरण होता है, तो माध्यम के किसी भी कण का जो विस्थापन होगा, पहली तरंग के द्वारा कितना होगा और दूसरी तरंग के द्वारा कितना होगा, वो दिखा रही हैं दोनों इक्वेशंस। कंडीशन कुछ इस तरह की है कि हमारे पास दो वेव्स हैं, दो तरंगे हैं जिनमें जिनकी दिशा
एक साथ एक समय में एक ही दिशा में वो दोनों तरंगे भेजी जा रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी समान है। कुछ इस तरह का केस है कि मेरे पास दो तरंगे हैं, पहली तरंग ये है और दूसरी तरंग ये है, और कंडीशन ये है कि ये मान लीजिए फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और कंडीशन ये है कि इन दोनों तरंगों की हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। Have equal frequencies, and so y equal time period, and of equal wavelength। तो जो वेवलेंथ होगी इन दोनों तरंगों की वो भी बराबर होगी, यानी फ्रीक्वेंसी n भी इक्वल है, टाइम पीरियड t भी इक्वल है, वेवलेंथ l लैम्बडा भी इक्वल है, और ये दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, यानी इसी दिशा में दोनों तरंगों का जो संचरण हो रहा है वो इसी दिशा में है, और जो समय है जिस पर वो स्टार्ट करती हैं अपना मोशन वो भी t ही है। लेकिन दो डिफरेंसेस हैं। एक तो ये है कि इस तरंग का जो एम्पलीट्यूड है, ये इसको हमने स्मॉल a कंसीडर किया है, और इस तरंग का जो एम्पलीट्यूड है ये इसको हमने b कंसीडर किया है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इनमें जो फेज डिफरेंस है, कला में जो अंतर है, कलांतर जिसे हम कहते हैं, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज फाई। सो ये दो अंतर हैं, द एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, फेज आर डिफरेंट, बट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, so why same time period, so why same wavelength, same direction, same time. These are the similarities, and the difference is about in amplitude are different, and phase differences exist between the two waves. So let us कोई भी पार्टिकल होगा, जो माध्यम का कोई भी पार्टिकल होगा जो इस वेव, मान लीजिए यहाँ पर किसी दूसरे माध्यम में ये तरंग जाती है, इस माध्यम के कण को ये y1 डिस्प्लेसमेंट करती है और ये तरंग इसी को y2 डिस्प्लेसमेंट करती है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इस माध्यम के कण के डिस्प्लेसमेंट की वो कुछ इस तरह की होंगी, दैट y1 इज इक्वल्स टू a sin 2 pi by lambda vt minus x। दिस इज द सेम इक्वेशन एज वी स्टडीड बिफोर, दैट इज ओमेगा t प्लस फाई। ओके, सो सेम इक्वेशन है, बस इसमें यहाँ इसको जो फॉर्म v 2 pi by lambda और vt के फॉर्म में लिखा गया है। ओके, ये सेम इक्वेशन ही है जैसे जो हम पहले स्टडी करके आए हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। सेम इक्वेशन ही है। सो यू नो दैट दिस ओमेगा t कैन बी रिटन एज 2 pi n, and n can be written as 1 over t, so 2 pi over t. So this is the same equation as we studied before. This equation, the displacement equation, this equation a y is equals to a sin omega t plus phi, बस उसको लिखने का तरीका अलग है, बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द फर्स्ट वेव इज showing by this equation number first, y1 is equals to a sin 2 pi by lambda vt minus x, and y2 is equals to b sin 2 pi by lambda vt minus x plus phi. This is equation number 2. Look at these two displacement. Amplitude for the first wave is a, and amplitude of the second wave is b. Okay, wavelength same, time same, velocity same, and there is a difference of phi, the phase difference between the two waves. Okay, so everything is same, only the amplitude and the phase difference between the two waves are different. Okay, where v is the velocity of propagation of each wave. जिस velocity से आगे बढ़ रही है वो velocity है
V. So the resultant displacement of the particle due to the superposition of the two waves is given by this. This is the principle of superposition. If the displacement of a particle of medium from wave 1 is y1 and from wave 2 is y2, then the total displacement of the particle by the use of superposition principle, by the theorem of superposition, is y is equals to the vector sum. Because you can say it as vector sum, because displacement is a vector quantity, so you can say it as the vector sum of the two displacements. So the total displacement of the wave is equal to y1 plus y2, hence the vector sum of the two displacement. Because we are dealing here only with the magnitudes of the displacement, that's why we have no need to represent in vector notation it, because we are dealing here with magnitudes only. Okay, so put here the value of y1 from equation number 1 and value of y2 from equation number 2. We have a sin 2 pi by lambda vt minus x plus b sin 2 pi by lambda vt minus x plus y. This is the value of y1 and this is the value of y2. Okay, so the first term is same, a sin 2 pi by lambda vt minus x plus b, and here expand the formula of sin a plus b. यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, वो sin a plus b का फॉर्मूला बन रहा है. ये पूरा टर्म a की जगह है और ये जो phi है ये b की जगह है. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आएगा, क्योंकि sin a plus b का आई होप आप फॉर्मूला जानते होंगे, sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. So let us expand it. So b is same and expand the formula of sin a plus b. So sin a and cos b plus cos a and sin b. This sin a cos b cos a sin b. This is the formula of sin a plus b. This whole term 2 pi by lambda vt minus x in place of a and phi in place of b. So the first term is as it is, a sin 2 pi by lambda vt minus x is same, and multiplied by b. In this equation we have b sin 2 pi by lambda vt minus x cos phi multiplied by this term, and b is when multiplied by this term, this gives me b cos 2 pi by lambda vt minus x into sin phi. Okay, so look at this term, sin 2 pi by lambda vt minus x, sin 2 pi by lambda vt minus x and sin 2 pi by lambda vt minus this term sin 2 pi by lambda vt minus x, this term and this term will be common in the first two term, so take it common. Sin 2 pi by lambda vt minus x is common, and when it take common is sin 2 pi by lambda vt minus x, then a is left in the first term, a is here, plus sign is as it is, and sin 2 pi by lambda vt minus x, this term is taking out of common, so b cos phi, this b cos phi, and the last term is same. And let us rewrite in some specific format that cos 2 pi by lambda vt minus x is this and b sin phi is this. Say this is equation number 3. इसको इस तरह से लिखने का क्या फायदा हुआ कि ये जो ब्रैकेटेड टर्म है sin 2 pi by lambda vt minus x and this and sin cos 2 pi by lambda vt minus x and b sin phi, इनको स्पेसिफिकली लिखने का, ये तो इस टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कॉमन है ही, ये तो कॉमन, ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बचा. और इस इक्वेशन को हमने जरा सा रीराइट किया है, स्पेसिफिक मैनर में लिखा है, टर्म्स वही है, देखिए b cos 2 pi by lambda vt minus x cos 2 pi by lambda vt minus x and sin phi. तो टर्म्स वही हैं सेकंड वाले में, लेकिन स्पेसिफिक मैनर में लिखा है. और क्यों लिखा है इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने हैं इस इक्वेशन में, तो मैं ये कह देता हूं कि a प्लस बी कोस फाई, यानी ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख रहा हूं a cos थीटा, और इनका आगे यूज भी समझेंगे क्यों ऐसा लिखा गया. और जो ये टर्म है b sin फाई इक्वेशन नंबर 3 में, इसको मैं लिख रहा हूं a sin थीटा. ओके, और ऐसा करने से मुझे लाभ क्या होगा वो देखिए. अब मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं और फिर से एक एक्शन करता हूं, दैट डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. तो 5 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे,
So 5/4. So A is cancelled by A. Sin theta over cos theta gives you tan theta. And B sin phi over A plus B cos phi. B sin phi over A plus B cos phi. This is equation number 4th. This is equation number 5th. And this is by dividing the result we obtained by dividing these two equations. The tan theta is equals to B sin phi over A plus B cos phi. This is equation number 6th. Okay. Now let us move forward, and we have this. Now squaring and adding equation number 4th and 5th. अभी हमने डिवाइड किया था, अब उनको दोनों तरफ का जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों इक्वेशन का 4 and 5, और फिर इनको ऐड कर दीजिए। तो देखिए जरा, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4th, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो A प्लस बी कोस फाई है और राइट हैंड साइड है A कोस थीटा। तो जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और जब फिफ्थ इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो यहाँ हमें मिलेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया, ऐड ओवर करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना है। सो लेट अस डू दिस। दिस इज सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी हैव, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो है हमारे पास A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर होने के बाद, और यहाँ जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो बनेगी A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे फिर इनको ऐड भी करना है, जोड़ना भी है। तो जोड़ेंगे जब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो आप ये देखिए कि राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज स्क्वायर करना है और ऐड करना है। सो स्क्वायर किया तो मेरे पास ये टर्म बनी A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर किया मैंने तो मेरे पास टर्म बनी A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मुझे इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मेरे पास बचेगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल 1। सो मेरे पास राइट हैंड साइड में बचेगा A स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, A प्लस बी कोस फाई होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, और प्लस एडिंग दीज टू। सो लेट अस सी दैट। सो जो राइट हैंड साइड वाला A स्क्वायर था उसको मैंने लिख दिया A लेफ्ट हैंड साइड में लाके, और जो इसका स्क्वायर था वो बदल गया इस स्क्वायर रूट में, और जो अंदर जो क्वांटिटीज था उनका मैंने स्क्वायर खोल दिया। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2AB, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B कॉस फाई एंड प्लस 2AB, दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2AB cos phi, this is the whole square of A plus B cos phi, and the other term is B square sin square phi. So look at these two terms, B square cos square phi and B square sin square phi. So B square is common in these two terms, and again cos square phi plus sin square phi according to the trigonometric rule gives me 1. So here A square is same, B square is obtained from these two terms, B square cos square phi plus B square sin square phi. So the result is B square, and this term 2AB cos phi, 2AB cos phi is same. Say this is equation number 7. This equation gives me actually the resultant amplitude, or you can say it the amplitude of resultant wave, which is obtained by the superposition of two waves for which the displacement equations are these. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आर दीज। ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उन दोनों के सुपरपोजिशन से जो मुझे वेव मिली है उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह का होगा जो मुझे देता है इक्वेशन नंबर 7। लेकिन ये एम्पलीट्यूड इस एंगल यानी जो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स है उस पर डिपेंड करता है। ओके, उस पर डिपेंड करता है, चूंकि A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, 2AB भी कांस्टेंट है, प्लस वेरिएबल क्वांटिटी क्या है फाई, और उसकी वजह से कोस फाई। सो
this equation number 7 gives me the resultant amplitude, or you can say it is the amplitude of resultant wave, in other words. Okay, amplitude of resultant wave. रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा, इक्वेशन नंबर 7 जो मुझे प्रोवाइड कराती है. ओके, सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इज गिवन बाय, ये इक्वेशन नंबर 3 था मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 जो मुझे देता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. ओके, और ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं इस इक्वेशन में करूंगा, यानी a प्लस बी कोस फाई की जगह में रखता हूं a कोस थीटा, और b साइन फाई यानी इस टर्म की जगह में लिखता हूं a साइन थीटा, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये जो इक्वेशन y जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मुझे देगा वो क्या देगा, आप देख सकते हैं यहाँ जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन नंबर 3 से, जिसे मैं लिख सकता हूं, दैट इज y इज इक्वल्स टू a cos थीटा is in place of a plus b cos phi, and sin 2 pi by lambda vt minus x is the same term, a sin theta in place of b sin phi, and cos 2 pi by lambda vt minus x is same. So again look at here, a is common in this term, and this term again is sin a cos b plus cos a and sin b. The term 2 pi by lambda vt minus x is in place of a, and the term this theta, this term is in place of b. So this is again the formula of sin a plus b. This is again the formula of sin a plus b, because a is common, so that formula is turns as sin 2 pi by lambda vt minus x cos theta plus cos 2 pi by lambda vt minus x sin theta. So sin a plus b. A in place of a there is 2 pi by lambda vt minus x, and in place of b there is theta. So this equation becomes y is equals to a sin 2 pi by lambda vt minus x in place of a plus theta. Sin a plus b explained in this form, can explain in this form. Okay, this is equation number 8. So equation number 8 gives me the resultant displacement of the two waves which are initially have same frequency, same amplitude, same wavelength, and different amplitudes, different phase. Okay, this equation number 8 gives me the resultant displacement of the two waves which are initially in these conditions. Okay, so this is equation number 8, and this is my resultant displacement of the two waves which are initially has same frequency but different phase and different amplitudes. Okay, and the resultant amplitude is a, which is given by equation number 7, and dependent on this phase difference phi. Whatever the phase difference, phi is 0, so a square plus b square plus 2ab cos 0 1, so it is a square plus b square plus 2ab, which is a plus b whole square. Square is cancelled with square root, so the resultant amplitude is equal to a plus b. That is the resultant amplitude, or the amplitude of resultant wave is equal to the sum of the amplitudes of the two waves. If phi is equals to 0, that is no phase difference between the two waves, when there is no phase difference between the two waves. So resultant amplitude in this, and if cos phi is -1, so this equation becomes a square plus b square minus 2ab. So this will becomes a minus b whole square. So square is cancelled with the square root, and you have left with a. The resultant amplitude is equals to a minus b, because square is cancelled with square root. So the resultant amplitude is equal to the
difference between the amplitude of the resultant, between the two initial waves which have same time period, same frequency, same wavelength, but different amplitudes and different phase difference, have phase difference, you can say it. So this is the gift of this equation, equation number 8. So let us discuss some interesting case, and which is the first case is when is constructive interference between these two. Now you have to be familiar with this word interference, व्यतिकरण. ये +2 के सिलेबस में आपने कहीं ना कहीं जरूर स्टडीज वर्ड को किया होगा, इस फिनोमिना को किया होगा कि interference is when the two waves which have same frequency, same direction of propagation, and propagate or start to move at same time, that at some points of the medium they meet where their resultant amplitude is maximum, and at some points where the resultant amplitude is 0. So these points where the amplitude is maximum, these are called as the point of constructive interference, and at these points when the resultant amplitude is 0, those points are known as the points of destructive interference. संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, जब एक साथ एक ही माध्यम में दो ऐसी तरंगे जिनकी सेम आवृत्ति यानी समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में भेजी जाती हैं, जिनके बीच कुछ प्रारंभिक कलांतर हो, तो वे माध्यम के बिंदुओं पर कुछ इस तरह मिलती हैं कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता या परिणामी आयाम, आप उसे कह सकते हैं परिणामी तीव्रता अधिकतम, और कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है. जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन पर विनाशी व्यतिकरण होता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण. तो I hope this word, I hope this you are all is familiar with this word, interference, व्यतिकरण. ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है वो यहाँ इन दो वेव्स के बीच में भी है, जिनका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दो इक्वेशंस के द्वारा हमने दिखाया गया है. यहाँ भी वो दोनों कंडीशंस मेंटेन की गई हैं. ओके, वो दोनों कंडीशंस को यहाँ भी मेंटेन किया गया है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख लेते हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? सो लेट अस सी इट. when phi is equals to 0, 2 pi, 4 pi, or you can say it in general 2n pi, where n has value 0, 1, 2, 3 up to. जब phi जो फेज डिफरेंस होगा दोनों तरंगों के बीच में, कलांतर जो होगा वो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, या फिर जनरली कहें तो 2n पाई हो. n की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं 0 से लेकर आगे तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर एक्स्ट्रा. ओके, सो व्हेन n is 0, 1, 2 and has extras values, so phi is 0, phi is 2 pi, or phi is 4 pi. Then what is tan theta? Because tan theta is this. The resultant phase between the two waves is given by this equation, and tan theta is b sin phi over a plus b cos phi. Okay, and when phi equal to 0, or phi equal to 2 pi, or phi equal to 4 pi, anything, or in general you can say it as 2n pi. Okay, so every time when phi is 0, phi is 2 pi, phi is 4 pi, sin phi will be 0. And if sin phi is 0, then this term, the right hand side term, will be 0.
That means the resultant phase between the waves when there is constructive interference is 0. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जरूरी है कि उन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो या तो ना हो, या अगर हो तो वो 2 पाई का हो, 4 पाई का हो, या फिर इन जनरल आप कहें तो 2n पाई जैसा इंटरफेरेंस हो, या तो ना हो, फाई इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमेशा जो रिजल्टेंट जो फेज होगा दैट इज थीटा इज ऑलवेज 0 व्हेन दिस कंडीशन इज फॉलोड। So this is the condition of constructive interference. Phi should be have these values. The phase difference between the two waves should have these values. Okay, and the resultant vibration is in phase. You can say it about from this equation that resultant vibration is in phase with the component vibration. And what is the resultant amplitude? And resultant amplitude is given by this equation number 7. And this equation, the resultant amplitude of the wave is depend on this a constant, b constant, 2ab constant, cos phi. Only depends on this. And because for the constructive interference, phi has value 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, or 2n pi. So cos phi, cos 0, because phi 0, cos 0 1, cos 2 pi 1, cos 4 pi 1, in general cos 2n pi 1. This means the resultant amplitude of the wave, the resultant amplitude of the wave is equal to or should be equal to a plus b, because a square plus b square plus 2ab cos 0 1. So this equation will become a square plus b square plus 2ab, that is the whole square of a plus b, that is a plus b whole square. Square is cancelled with the square root, so the resultant amplitude will be a plus b, which is the maximum amplitude. So why? In the case of constructive interference, the amplitude of the wave or the resultant wave will be maximum. They meet when the resultant is maximum. Okay. Hence, if the phase difference between the two waves is 0, it reinforms each other, means that they meet when the maximum amplitude is maximum at the points of constructive interference. Okay. And if a equal to b, that means the amplitude of the first wave is equal to the amplitude of second wave, then a is equals to a plus b, that means equals to 2a, because a is equals to b, b is equals to a. So place b is equals to a, so the resultant amplitude of the wave is equals to 2a. And intensity of wave or sound, you can say it is I is directly proportional to a square, that is the square of the amplitude. This is the formula for intensity of wave or intensity of sound. That is, intensity of sound is directly proportional to the square of the amplitude, and amplitude is this, because this condition is followed, a is equals to b. So according to this condition, the resultant amplitude is 2a, and because intensity of wave is proportional to a square, that's why the resultant intensity of the wave is square of this, that is square of this, that is 4a square. Hence, the intensity of sound is maximum at these points where the two waves differ in phase by 2n pi. जब भी constructive interference होगा, hence the phase difference of the wave is 2n pi form, and the intensity of the wave is become maximum. Hence, at the point of constructive interference, the intensity of the wave will be maximum. Okay. Now, talking about the path difference. The formula is lambda over 2 pi in two phase difference.
the path difference between the two waves. So lambda over 2 pi is the as it is, and the phase difference in general is 2n pi. So place here phase difference 2n pi. 2 is cancelled with 2, pi is cancelled with pi, and we are left with n lambda. That means where n has value 0, 1, 2 as extra. So when n equal to 0, 0, when n equal to 1, lambda, when n equal to 2, 2 lambda. So when the path difference between the two waves is such that 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, these all points has give rise the constructive interference. Sorry. So all these conditions, from all these conditions, there is all the points of constructive interference when the phase difference, this is the baseline, when the phase difference between the two waves is of the type of 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, or in general 2n pi. This is the key factor. And all the results, all these results are coming on this, on the base of this baseline, when the phase difference is of this type. Then the resultant phase difference, the resultant amplitude, the resultant intensity, the resultant path difference is of this type. But the baseline is this. The phase difference should be of 2n pi type for constructive interference between the two waves. This is the baseline. Now moving to the destructive interference, and where the points of destructive interference. Okay, so points where destructive interference is when phi is equals to pi, 3 pi, 5 pi, or you can say it in general is 2n plus 1 into pi. जब इस तरह का फेज डिफरेंस, इस तरह का कलांतर होगा दो तरंगों के बीच में, तो हम कहते हैं कि उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होगा, उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होगा. और अगर इन कंडीशंस को फॉलो किया जाए, फाई का वैल्यू अगर पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें इक्वेशन नंबर 7 क्या देती है? दैट इज a इज इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई, एंड cos पाई हैज वैल्यू -1, so a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab, because of this cos pi there is -1, and because of that -1 this plus sign is become minus. So the resultant amplitude of the wave is this. So a square plus b square minus 2ab, and this is the square, whole square of a minus b whole square. Square is cancelled with square root, so the amplitude will be minimum in the case of destructive interference. And the points of destructive interference is at where the phase difference between the two waves is of this type, pi, 3 pi, 4 pi, or 2n plus 1 pi type. So when a is equals to b, then the resultant amplitude will be 0. Okay, so the points of destructive interference is when the resultant amplitude of the wave will be 0. Okay, and intensity of sound or intensity of the waves or intensity of the resultant wave will be 0. Because the amplitude is 0. Therefore, the path difference. What is the formula for path difference? Is lambda over 2 pi into phase difference. So lambda over 2 pi, and phase difference is of this type, 2n plus 1 into pi. So put here 2n plus 1 into pi, pi is cancelled with pi, and the phase difference is of this type, like 2n plus 1 into lambda, where n has value 0, 1, 2, 3 as extra. So intensity of the sound is minimum, amplitude is minimum, path difference is of this type. These points where these all phenomena
are happen, these points are called as points of destructive interference. Points of destructive interference. Okay, so constructive interference is exactly, or you can say it, destructive interference is exactly opposite to the constructive interference. At constructive interference, resultant amplitude is maximum, intensity is maximum, path difference is of n lambda type. And at destructive interference, resultant amplitude is minimum, intensity is minimum, path difference is of this type. So these are the points of constructive interference, and these are the points of destructive interference. Okay. Now, conditions for interference of sound. Conditions for interference of sound. The first one is the two sound waves must be coherent. एक ही सोर्स से निकली हों. It means the phase difference between the two source must remain constant, बदलना नहीं चाहिए समय के साथ, so that the phase difference between the two wave trains at any points does not change with time. ये मैंने बताया. The two source must emit waves of the same frequency and same amplitude. And the third is the two wave trains must travel in the same direction that is parallel to each other. These are the conditions for interference. इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one. Thank you.